तो ये कुछ पेयर ऑफ वर्ड्स हैं, इनका रिलेशन हमने अंडरस्टैंड करना है और उसके बाद सेम रिलेशन हमने इन ऑप्शंस में पिक करना है। ओके, आइलैंड, आइलैंड, यू नो व्हाट इज मीन बाय आइलैंड? आर्किपेलागो, आर्किपेलागो एक्चुअली जो बहुत सारे आइलैंड्स जो होते हैं ना, उससे हमारे पास अम, उसको हम आर्किपेलागो कहते हैं। ओके, लाइक आर्किपेलागो इज द कॉम्बिनेशन ऑफ आइलैंड्स। ओके, तो ट्री एप्पल्स, नो इट इज नॉट नेसेसरी कि जहाँ जिस ट्री में एप्पल होंगे तो वो उनको हम ट्री कहेंगे। ओके, दैट्स नॉट पॉसिबल। अच्छा, इसका रिलेशन इसके साथ लाइक जस्ट लाइक दिस। ओके, आइलैंड इज अ स्मॉल थिंग, आर्किपेलागो इज अ बिग थिंग। ओके, तो इस तरह ट्री एप्पल, नो दैट्स नॉट क्रिकेट बैट। तो क्रिकेट में हमारे पास बहुत सारे और भी आ जाते हैं। अच्छा, स्कूल, क्लास, रन, वॉक, यस, स्कूल इज मेड अप from the lots from the from lots of the classes, like स्कूल जो होते हैं उसमें हमारे पास काफी सारे क्लासेस होते हैं। लाइक स्कूल इज मेड अप फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ द क्लासेस। ओके, लाइक बहुत सारे क्लासेस मिल जाते हैं उस स्कूल में, जैसे बहुत सारे आइलैंड मिल जाते हैं, उससे आर्किपेलागो हमारे पास बन जाते हैं। ओके, तो ये दोनों इसका रिलेशन सेम है, तो इसमें सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, एमसीक्यूज नंबर 12, इसमें सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके थ्रू हम अर्थक्वेक को मैयर करते हैं। ओके, लाइक अर्थक्वेक जब आ जाते हैं तो सिस्मोग्राफ आपको गाइडेंस देते हैं कि इतनी अर्थक्वेक थी। तो सुनामी, वाटर, नो, टेम्परेचर, थर्मामीटर, यस, टेम्परेचर और थर्मामीटर, ये टेम्परेचर के थ्रू हम लाइक थर्मामीटर के थ्रू हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं, सिस्मोग्राफ के थ्रू हम अर्थक्वेक को मेजर करते हैं। ओके, जियोग्राफी, लैंड, सिटी, कंट्री, नो, इसमें ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट आंसर हो गया। अच्छा, एमसीक्यू 13, केयरफुल, पंक्टिलियस, पंक्टिलियस एक्चुअली लाइक टू मच केयरफुल को कहते हैं, लाइक बहुत ज्यादा मुहतात होना, उसको हम पंक्टिलियस कहते हैं। ओके, पंक्टिलियस। ओके, like extremely careful, उसको हम punctilious कहते हैं। Okay, so you can say that punctilious is higher degree of caring। Okay, तो इस तरह boiling, lukewarm, laziness, lazy, prime, expert, intern, external, no, laziness, lazy, बॉइलिंग, lukewarm, lukewarm नीम, नीम वाटर को कहते हैं, लाइक थोड़ा सा गर्म हो उसको हम lukewarm कहते हैं। ओके, तो थोड़ा सा केयरफुल हो, बहुत ज्यादा केयरफुल हो तो बहुत ज्यादा बॉयल हो तो उसको हम फिर लाइक option A will have the same relation in between these two words as in the question। और क्वेश्चन में जो रिलेशन है वही रिलेशन हमारे पास ऑप्शन ए में भी देख रहा है। ओके, तो इसमें ऑप्शन ए हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। जिसके बाद हमारे पास फिलिंग द ब्लैंक्स विद सुटेबल आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। ओके, काइंडली आस्क हर टू प्ले द पियानो, शी इज ए voracious, vicious, volatile, virtuous or fairness। ओके, ये लाइक एक्सपर्ट को कहते हैं, या यू कैन से हाईली स्किल्ड को हम वर्क कहते हैं। Kindly ask her to play the piano. She is a high skilled pianist. Okay, yeah, she is a virtuous so pianist। Okay, तो इसमें हमारे पास ये करेक्ट आंसर होगा। ओके, एमसीक्यू नंबर 15, ही वाज डिस्ड फ्रॉम ऑल चार्जेस लेव्ड अगेंस्ट हिम, ये अक्सर वो भी होते हैं, न्यूज़ में भी अक्सर ये सेंटेंस होते हैं रिपीट हुआ होता है, लाइक ही वाज exonerated from all the charges levied against him, like free from blame। Okay, exonerated means कि you can say free from blame। या उर्दू में हम इसको कह सकते हैं इस इल्जाम से बरी होना। Okay? तो इसमें बस ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा।